India. Yes, girls, don't talk. Make in India plan is an initiative by the Indian government give foreign investor a chance to invest in India in various fields of business. It's aimed at attracting capital and technology investment product manufacturing in India by the multinational and national companies to push up the Indian economy. The primary objective of Make in India policy is to create manufacturing firms within India, including the sector like automobiles, biotechnology, defense, mining, oil and gas, ports, railways, textile, and much more. This report was made by the PM of India, Narendra Modi, on 25 of September 2014 at Vigyan Bhavan, New Delhi. It is direct opportunity in India to increase the employment and make our nation a global manufacturing hub. It is a big prize-worthy step taken by the government of India to reduce the level of unemployment faced by the youth of the country. I myself support to Make in India program with a heart. Thank you. Any feedback from your side? Okay, first of all, how many times have I already told you to revise your speech before coming? Have you prepared? नहीं होगा बच्चे 5 to 4 times नहीं. That is why a number 15 is given. That there's a reason behind it. ठीक है? वो एक्सपेरिमेंट करके मुझे पता चला है that 4 to 5 में नहीं. आपको कम से कम 15 टाइम्स कम से कम रीड करना है, तब जाके आपको पहली बार खुद में कॉन्फिडेंस लगेगा because you know the ideas that you are going to present. अपने दिमाग में वो आइडियाज फ्लो करने लगे, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा. आप आधी बात याद है तो आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकते. एंड सेकंड ऑफ ऑल, it creates a better posture when you are speaking to the audience rather than reading to them. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Good morning to all. My name is Mari and today I am here to present speech on topic Make in India campaign. Make in India was started by Prime Minister Narendra Modi on September 24, 2014 in Vigyan Bhavan, New Delhi. The aim was to attract the top business investors around the globe to invest in India, providing an opportunity to all investors to set up new business including manufacturing, textiles, automobiles, production, retail, chemicals, IT, ports, hospitality, tourism, healthcare, railways, leather, etc. in the country. The motive behind this campaign is to make India a world-class powerhouse, which will help in addressing the larger issue of the Indian economy. Some initiatives which come under Make in India are Digital India, Startup India, Initiative Scale India Program, and Smart Cities. Make in India will help to make India free from unemployment by bringing development and growth. This policy is an urgent need. It can bring down poverty rates in India to a great level by solving the unemployment issue for youth. Thus, the country economy will achieve a new height after the success of this campaign. All right. Any feedback from your side? Okay. Yes, you were going too fast. And again, I'm telling you, do not write the content point-wise. Make in India campaign in नहीं करना है. एक पॉइंट को पकड़ के चलिए. That is much better because you will be explaining it in your own words, and that is much better to remember क्योंकि ये आपके खुद के words होंगे. ठीक है, बार बार नहीं बताना पड़ेगी चीज. जब भी स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं, जब भी आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जहां पर हमें पॉइंट वाइज लिखना पड़ रहा है, that means you are including much data which is unnecessary. ठीक है, include one data. जैसे Make in India include what? One point. First point.
What is the first point? No, no, not that. Like Digital India आपका एक campaign है under Make in India, ठीक है? Now उसको Digital India का आपका जो एक campaign है उसको पकड़ के चलिए and explain that in a simpler way so that each and every audience is able to understand. Instead of giving pointers, give one point and explain it in such a way कि हर किसी को समझ में आ जाए. आप जितने ज्यादा points करेंगे उतना ज्यादा problem होगा समझने में, उतना ज्यादा आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है? डू नॉट डू दैट टू योरसेल्फ, डू नॉट डू दैट टू योर ऑडियंस, ठीक है? सिट डाउन एंड अगेन try to practice more and more before coming. Yes, roll number 54 and 55, anyone? हाँ चलिए next. Take 2 minutes and come up here. Yes, उसके बाद यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रेजेंट करने के लिए? Okay, again I am looking at the same faces who have already presented. बाकी students का क्या? Last 3 benches. Last 3 benches. आप में से कोई prepare करके आया है speech? हाँ कर लो. अभी रुक जाइए. Let him come first, then anyone else. Yes, 55. We are waiting. This is your first speech? Yes, again, I have no answer from the last benches. Last 3 benches, any one of you who have prepared the speech? Last के 3 benches में से किसी का भी speech prepare है? Good. You would be the third one to present. के बाद एक person है, उसके बाद आप आएंगे present. Verdict is given, somebody else is allowed to take up that. एक बार बोल दिया गया है. Start होगा. Yes, stop talking. You can prepare your own speech in the meantime. डरा नहीं है. मैम डरा लग रहा है. Do not behave like this. Both of you. You are standing in front of your audience. You cannot behave like that. Sorry. And you also. Good morning, all of you. My name is Aryabhata and my topic for English speaking task is a speech upon Make in India campaign. Make in India campaign is a major national program. India is a major national program of government of India designed to my tongue India designed to facilitate the investment, to foster innovation, enhance skill development, protect intellectual property, and build best in a vast manufacturing infrastructure in the country. The motive behind the campaign is to make India a world-class powerhouse, which will help in addressing the larger issue of Indian economy. Some initiatives which come under Make in India are Digital India Startup, initiative India Skill Program, and Smart City. Make in India will
help to make India free from unemployment by bringing development and growth. This policy is urgently needed. I can bring down poverty rates in India to a great level by solving any employment issues for youth. Thus, the country's economy will achieve a new highest after the success of this campaign. Thank you so much for listening. I hope this speech is motivational and Make in India was informative for you. Thank you. All right. Any feedback from your side? Yes. I can Eye contact and pronunciation. How can you hear him speaking? नहीं वो तो डिस्टर्बेंस उसका दिमाग में है ही स्पेशली आई कैन नॉट हियर हिज वर्ड क्लियरली ठीक है आपके वर्ड्स जो हैं वो क्लियरली सुनाई नहीं दे रहे हैं या तो आप बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं आपका बोलने में वैसे ही है ठीक है तो डू वन थिंग ट्राई रीडिंग ठीक है रीडिंग करना स्टार्ट कर दो अभी से एवरी डे एटलीस्ट 5 पैराग्राफ्स आप रीड करेंगे ठीक है क्या रीड करना है वो आप पे डिपेंड करता है ठीक है राइट नाउ आपका कोर्स स्टार्ट हुआ नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकती कोर्स की बुक पढ़ लो बट इफ यू वांट आपका जो भी कोर्स है आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं वट एवर बुक विल बी रिकमेंडेड फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम व्हिचएवर यू हैव द कोर्स विद वो रीड कर सकते हो आउट लाउड रीड करिए ठीक है क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम जो होता है या जिन लोगों को फास्ट बोलने का दिक्कत है वो तभी सॉल्व होगा जब आप खुद को बोलते हुए सुनोगे ठीक है रिकॉर्ड योरसेल्फ व्हाइल टॉकिंग फिर सुनो कैसा लगता है सुनने में किस तरह आवाज रहती है ठीक है इवैल्यूएट योर ओन एनालाइज योर ओन डाटा ठीक है हाउ अबाउट द स्पीच कंटेंट किसी को समझ में आया क्या बोल रहा है कुछ भी नहीं yes what was the idea that he was trying to study for the employment was it only one point or was it all the other points taken care of again same thing बच्चे बार बार कह रही हैं टेक वन पॉइंट यू नीड नॉट एक्सप्रेस बच्चे जरूरी नहीं है कि मेक इंडिया कैंपेन में हजारों कैंपेन चल सकते हैं लेकिन आपको एक ही कैंपेन के बारे में बात करनी है ठीक है व्हाट इज योर आइडिया व्हाट डू यू थिंक इज मच मोर इम्पोर्टेंट it might be related to education it might be related to something that has been said to reduce the gap of gender discrimination reduce the gap of wealth ठीक है उसके लिए कोई भी एक टॉपिक ले लो ठीक है जरूरी नहीं है कि वो तुमसे जुड़ा होना चाहिए जरूरी नहीं है कि तुमको उसके बारे में सब कुछ जानना लेकिन कोई एक ही टॉपिक लो ठीक है उससे क्या होता है जितना आपके पास कम रहेगा सोचने के लिए उतना आप अपना आइडिया डालेंगे जितना ब्रॉडर आइडिया आप करेंगे ना ठीक है the broader you take all the differentiation ठीक है उससे ज्यादा आपको डाटा मिल जाएगा और जितना ज्यादा डाटा मिलेगा आपको इतना दिमाग लगाना छोड़ दो ठीक है अच्छा one student have asked me to give one sample speech for you to be able to write or to tell how to evaluate मैंने जो आपको फॉर्मेट तो दे दिया है लेकिन अभी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है so let's do one thing I will provide you a sample but in the meantime I want you to at least try for your own ठीक है अपने से थोड़ा सा ट्राई करिए जो मॉडिफाई करना होगा जो एक्सप्रेस करना होगा जैसे मैंने पहले भी बताया कंटेंट बहुत सारे लोगों की अच्छे आ रहे हैं ठीक है सिंपल वे में आप प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो नेट से देख लेते हैं नेट से कॉपी कर लेते हैं तो उसमें कुछ भी डाटा जो आप कॉपी करते हो ना वो सिंपल लेवल में नहीं रहता है आप अगर डेफिनेशन भी कोई पढ़ रहे हो गूगल पे तो वहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं रहता है वो भी समझने में आपको थोड़ा देर लगता है या तो सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा या फिर पूछना पड़ेगा हिंदी भी अगर आप देख रहे हैं हिंदी में उसका अनुवाद भी देख रहे हैं तो भी आपको समझ में नहीं आता है कई बार तो सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में लिखना ही बहुत बड़ा टास्क है और ये बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं इसके लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ ठीक है जो भी सिंपल वर्ड्स में अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट इज वेरी मच अप्रिशिएटेड फ्रॉम माय साइड बट उसके साथ साथ सिंपल लिखिए उसमें कोई प्रॉब्लम लेकिन थोड़ा सा आप उसको एंटरटेनिंग कि वो नहीं होगा तो जैसे आप लोग शायरी वगैरह लिखते हैं दैट इज वेरी कॉमन रिच वर्ल्ड में तो बहुत कॉमन है एवरी पर्सन इज राइटिंग शायरी तो वो चीज कॉमन हो गई ना देखो पीपल आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हेन पीपल स्टार्ट टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू
they want it or either they want much better from it. अगर मैंने एक्सपेक्टेशन लगा दी कि ये बच्चा जो है या ये बच्ची जो है कि बहुत अच्छा स्पीच देती है, तो मैं इससे बेटर नेक्स्ट टाइम में चाहूंगी कि या तो वे उतना ही प्रेजेंट करे, ठीक है, वो भी एक टीचर के नजरिए से सही नहीं, तो उससे बेटर ही चाहिए, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन योर स्किल सेट टू डेवलप, नॉट टू बी कम एट द स्टेज एंड स्टॉप, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन जब आप दे देते हो ऑडियंस को कि ये पर्सन जब भी आएगा स्टेज पे एक शायरी बोलेगा, अगर नहीं बोला तो ऑडियंस आपकी डिसअपॉइंट होगी। सेकेंड चीज, अगर बोल भी दिया तो भी आपकी ऑडियंस एक तरह से बोर हो जाएगी, उन्हें लगेगा कि ये तो शायरी होता है, कुछ नया नहीं कर। अंडरस्टूड? नेवर लेट एनीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज इनसाइड योर माइंड, ठीक है। किस तरह का स्पीच आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो ये आपके अलावा किसी को पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? दैट्स हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। आप उसमें डाटा डाल रहे हो बहुत ज्यादा, वही मैं बार बार कहती हूँ। मेक इट इन अ फन टाइप स्टोरी, ठीक है। एक स्टोरी बताइए। मेक इन इंडिया की कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, आपको मिल जाएंगी। अपने आइडियाज में प्रेजेंट करने की कोशिश करें। दैट आफ्टर मेकिंग based around the world. Let me give you an example of a simple woman who was working in a shop, and she started with the help of digital India. She started getting the payment online, and it became much easier for her for the transaction. Understood? Make it a story that is very much connected to the base level. आप सिंपल बोल रहे हो अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा कनेक्शन नहीं बैठ। सिंपल बोलने से सिर्फ आपकी ऑडियंस सुनती है, अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना है यू नीड टू पेयर अप इट विद समथिंग एल्स, ठीक है। शो योर क्वेश्चन टू योर ऑडियंस। अच्छा, एक बच्ची क्वेश्चन पूछती है, बार बार आप आंसर भी नहीं करते हो। इफ शी इज साइलेंट दैट मींस शी इज एक्सपेक्टिंग द आंसर ना। वो अगर देखो साइलेंट रहने का मतलब क्या है स्पीकर का, कि वो क्लोज ओपन एंड क्वेश्चन है, वो आपको आंसर करना है। अगर वो साइलेंट जो है वो सिर्फ 2 सेकंड का या 1 सेकंड का रहे, दैट मींस वो क्लोज एंड क्वेश्चन था, वो आपसे आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, वो या तो सर हाथ खिलाने में या हाथ खड़ा करने में। अंडरस्टूड? लेट्स से इफ आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, जैसे क्लास में आते मैं पहले बोलती हूँ ना कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रेडी टू प्रेजेंट, एम आई एक्सपेक्टिंग एन आंसर वर्बली? वर्बली नहीं ना, आप हाथ खड़ा करके बताते हो या सर हिला के बताते हो या कॉपी दिखा के बताओगे आई एम नॉट रेडी, राइट और नॉट? So these type of questions make it interesting, and it is only interesting when the participants are participating. Understood? So you need to be motivating your speaker. आपका यहाँ पर जो रवैया है ना वो बहुत खराब लिसनर का है, या तो आप बात करना शुरू कर देते हो, कमेंट करना शुरू कर देते हो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ये चीज मैंने पहले भी क्लास में बताई है कि बिकम अ गुड स्पीकर यू नीड टू बी अ गुड लिसनर, ठीक है। आपको अच्छे से सुनना होगा अदर स्पीकर के आइडियाज, नहीं सुनोगे तो फिर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपने आइडियाज। बच्चे यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा? एक ही यूनिफॉर्म मिला है तुम्हें? ऑलराइट, ओके नेक्स्ट। 55 हो गया, 54 आया नहीं आया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट yes after Good morning, my excellencies friends. I am Nitesh Singh, and today's topic is Make in India campaign. Make in India campaign. Make in India campaign initiated by our government to attract foreign investors to invest in Indian manufacturing companies. And when foreign investor invest in Indian manufacturing companies, then India's has more more option to create employment to transform India into a global design and manufacturing hub. Reason behind this campaign is poor condition of manufacturing in India. Overall Indian economy is only 15%, and hope behind this campaign started by our government to increase manufacturing growth at the rate of 15% per annum.
and other one to increase 100 million, to create 100 million additional manufacturing jobs in the economy of 2022. This date is postponed goes to 2025 because of COVID-19 pandemic. And other reason is increase GDP to 25% in 2022. This date is also postponed. This date is also goes on 2025 because of pandemic. Make in India campaign is initiated by our government on 14 September 2014 to encourage foreigner companies to invest in Indian manufacturing companies. And make for India is not so good. So as you looking, in all over world, other people seen as a India is a big market, not as a country. Conclusion of making India campaign to erode unemployment. Erode means destroy. In other words, unemployment from India, free and bringing development. Thank you. Yes, any feedback for him? नहीं, if repeating that is all right. वो repetition होने में कोई problem नहीं है. Pronunciation में दिक्कत है आपको, इसके लिए work करिए. Hesitation की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि आपका फिर भी मेरे को बात करने के तरीके से ही समझ में आ रहा है कि आपका pronunciation problem. तो उसके लिए अब बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे वर्ड्स में हो रही है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स में हो रही है जिसके आपको वर्क करना है. ठीक है, अगेन एंड अगेन आइडियाज जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको मिनिमम रखिए. ठीक है, जितना ज्यादा आप डाटा डालिएगा उतना ज्यादा वो इंफॉर्मेटिव होगा, उतना ज्यादा वो बोरिंग हो जाएगा. ठीक है, सो यू आर नॉट गिविंग अ लेक्चर हियर अबाउट मेक इन इंडिया, यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट. ठीक है, आपके ओपिनियन में मेक इन इंडिया क्या है ये बताना है, ये नहीं बताना है कि मेक इन इंडिया क्या है. मेक इन इंडिया क्या है किसे पता है बताओ. हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया व्हाट मेक इन इंडिया इज? सबको पता है, देन व्हाट्स द नीड टू एक्सप्लेन. ठीक है, इतना बताने की जरूरत ही नहीं है. वही मैंने कहा, इसीलिए मैं कहती हूँ जितना कम डाटा आप लेंगे, जितना उसको कस्टमाइज कर देंगे उतना ज्यादा बेटर है. ठीक है, अगर एक ही पोर्शन ले रहे हो जो वो ट्री रहेगा ना डिफरेंशिएशन का, उसका जो ट्री रहेगा उसका जो सबसे छोटा पार्ट है उसमें से एक पोर्शन, उससे क्या होगा कि हाँ, उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि डिजिटल इंडिया में क्या कैंपेन में क्या क्या इंक्लूड है. ठीक है, या और अदर कैंपेन्स में क्या क्या इंक्लूड. उन्हें पता है कि डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया के अंदर आता है, लेकिन मेक इन इंडिया के अंदर जो डिजिटल इंडिया आ रहा है उसमें नहीं पता उनको. ठीक है, तो एक सेक्शन निकाल के रखिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं देना, ओपिनियन देना है. आपको बताना है कि आपको उसके बारे में क्या लगता है. What do you think digital India is helping in Indian economy or the growth of Indian? ठीक है, yes, 54. चलिए, you have 2 minutes while that person is presenting. एक पीछे स्टूडेंट है, उसके बाद आप प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, चलिए आइए. And do not delay for even a 1 minute. Do not delay for even 1 minute. Good morning, everyone. My name is Vikram Kumar. I am from Patna, Bihar. Today I am here to give a speech about Make in India campaign. Make in India campaign was launched by PM Narendra Modi on 2014. In 2014, it is the first step to make a call to the top business investors all across the world. This unique plan has resourceful proposal for foreign companies to set up manufacturing units in India. It also means for improving the market of digital network in the country to create global hub for new business. Some of the advantages of Make in India as follows, like country will become
completely self-dependent in manufacturing sector. Benefit to both parties like investors or as well as country, because if in matlab, third, the growth of Indian GDP as well as increase the value of Indian currency. So in the end of the speech, I want to say that to make India free from unemployment, we can decrease poverty in India to solve the unemployment issue for youths. Thank you. Yes, any feedback from your side? Yes, sir. Pronunciation. Okay, pronunciation. Yes, big sign. Do not comment like that. I don't like that kind of behavior in my class. आप सड़क पे नहीं खड़े हैं, आप क्लासरूम के अंदर थोड़ा डेकोरम बना के रखिए. नेक्स्ट क्लास पर यहीं पर जो सड़क वाली हरकत करेगा ना, उसको यहीं पर फिर मैं मुर्गा बनाऊंगी. फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कहाँ रिस्पेक्ट करना चाहिए. वो नहीं किया तो उसको अटेंडेंस नहीं मिला. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट पार्ट. ना जान लीजिए, ठीक है. बिहेवियर जहाँ आपका जरा सा भी हल्का सा भी इधर चला गया तो उसके लिए पनिशमेंट बहुत सिवियर है. और अगर नहीं करोगे ये फुलफिल तो सीधे पर वही अटेंडेंस कटेगा, तुम्हारा मार्किंग में मार्क्स नहीं जाएगा. तो जितना सिवियर अटेंडेंस, जितना सिवियर पनिशमेंट तुमको चाहिए, उतना ज्यादा तुम गलत हरकत कर सकते. और इतना याद रखना, यहाँ पर तुम अभी ब्रिज कोर्स में ही, ठीक है. और यहीं पे अगर पनिशमेंट मिलना शुरू हो गया, ये तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जुड़ता जाएगा. चलिए, यस, द स्टूडेंट हु हैज जस्ट कम. बच्चे, आपका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं लगता उतना प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी थोड़ा रीडिंग करिए एंड ट्राई टू गेट मोर कॉन्फिडेंस. प्रैक्टिस करके आइए बच्चे, ठीक है. Good morning. My name is Satyam Srivastava. My today's topic for speech is academic score not a good measure of intelligence. As academic tests are conducted to test if students studying or not, they basically test the learning ability of student, not his or her intelligence. Even famous physicist Albert Einstein was failed in his test. Intelligence is the potential to interpret or think on specific things. Einstein does and invent gas absorption heat pump and Einstein refrigerator, and give many theories, and his two famous theories were theory of relativity and theory of quantum mechanics. I have a story for you all. I think some of you already know about it. One day a boy came home with a note which was given to him by his school teacher, and teacher told him to give that paper to his mother. After reading that, his mother was tearful as she read that out that boy, to that boy, your son is genius. This school is too small for him and doesn't have enough good teacher for training him. Please teach him yourself. That was written in that letter. That boy thinks, but many years later, when his mother had died, he was looking through old family thing and he saw that letter. That your son is adult. It means mentally ill. He won't let him come to school anymore. And you know who was that child? That the great inventors of the century, Thomas Alva Edison. Later on, he invented many things like light bulb, gramophone, electric train, but he was famous for his invention of light bulb. As the both examples, the Einstein and Thomas Alva Edison, we came to a conclusion that academic score is not a good measure of intelligence. Thank you. Yes, any feedback from your side? Acha, you will see for anybody else? Okay, hesitation to thoda sa rahega because he is not used to coming up here. Second of all, idea was presented good, but one thing that I want to say कि यहाँ पर जितने भी topics किए जा रहे हैं, not related to this speech, जितने भी topics किए जा रहे हैं, I can hear same example, same data delivered again and again. और ये चीज आपका competition में नहीं allowed होता.
whenever you go to any competition, especially a speech competition, अभी आपका communication test हो रहा है, आपको पता है, so many of you will be participating in speech competition. पहले से ही बता रही हूँ, अगर आपका डाटा रिपीट हो रहा है, अगर इसने एक स्टोरी बता दी है एल्गोरिथम के बारे में, आप दोबारा वो स्टोरी रिपीट नहीं कर सकते, no matter how way you are presenting, cannot repeat that story. अगर एक पर्सन ने बोल दिया मेक इन इंडिया कैंपेन 2015 में शुरू हुआ था, nobody else can repeat that story. ठीक है, so you need to keep in mind when same data is getting repeated twice, thrice, 5 times, 10 times, you will not repeat it into your speech. Yes, speech was good. Presentation only you have to work on little bit of your body language, because looking at you it feels like you're lazy. Okay, so the way you're presenting, it should be a little more confident and a little more energetic. थोड़ा सा energy से जाओ. Yes, who did I send next? The next किसी को बोला नहीं था. Yes, how many students are ready to present? एक बार hand raise कर लीजिए. बच्चे आपने जो अभी लिखा है वो प्रेजेंट करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई वोंट अलाउ दैट. जब मैंने पहले ही कहा है मिनिमम 50 टाइम्स रीड करिए व्हाटएवर यू हैव रिटन. डजंट मैटर वो आपके अपने आइडियाज हैं या आपने मिनिमम 15 इज द रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट क्लास पे अभी प्रैक्टिस करिए उसको. अच्छा, कौन 15 टाइम्स रीड करके आया आपने? नहीं, 15 मिनिमम 15. 12 घंटा नहीं लगेगा बच्चे. इट ओनली टेक्स मैक्स टू मैक्स, इट ओनली टेक्स 20 मिनट्स. सिर्फ 20 मिनट लगते हैं आपको स्पीच को 15 बार रिपीट करने में. नहीं नहीं, वो हो जाएगा, वरना नहीं चलेगा. मुझे ये स्पेसिफिकली बताइए 15 बार कौन रीड करके आया? यस, 15 मिनिमम है. 10 नहीं चलेगा, 12 नहीं चलेगा, 13 भी नहीं चलेगा, 14 भी नहीं चलेगा. 15 बार जिसने रीड किया है वहां तक. नहीं, 14.5 भी नहीं चलेगा, 15 भी नहीं चलेगा. रटने जैसा नहीं होता है ना. यू डोंट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. मैथ्स के फॉर्मूला के बिना क्वेश्चन सॉल्व होता है क्या? तो क्यों नहीं समझते हो? देयर इज अ टेक्निक बिहाइंड एवरीथिंग. ठीक है, वो साइंस में नहीं बिलीव करने वाले लोग मत बनो. ठीक है, आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ यू आर कॉमर्स बैकग्राउंड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइंस में बिलीव करना छोड़ दो. हर एक चीज का एक टेक्निक होता है. आप 15 बार जिस दिन रीड करके आएंगे ना, उस दिन अपना खुद का परफॉर्मेंस सुनिएगा लाइव जाकर. जिस दिन आप 15 टाइम्स रीड करके आ रहे हैं, उस दिन खुद का परफॉर्मेंस आप आके देखिए, एंड वो डिफरेंस आपको पता चलेगा. इट विल नॉट हैपन इन 14, इट विल नॉट हैपन इन 10, इट विल ओनली हैपन मिनिमम एट 15. आपके ब्रेन का एक वर्किंग होता है. ठीक है, हर चीज आपके ब्रेन के वर्किंग से डिपेंड करता है. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रेन वर्क्स, योर ब्रेन विल नॉट बी एनी हेल्प टू यू. वो फिर बस पड़ा हुआ एक अच्छा सा चमकीला ट्रॉफी बन के रह जाएगा. जो दिमाग है तो सही, लेकिन यूज करना आ नहीं रहा. ठीक है, यू नीड टू नो हाउ दिस वर्क्स. ठीक है, इसकी अपनी एक टेक्निक है यूज करने की. हर एक इंफॉर्मेशन को आपको टेम्पररी डाटा से, टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी जाने में टाइम लगता है. ठीक है, ये कंप्यूटर नहीं है कि एक क्लिक से आपने परमानेंट मेमोरी में सेंड कर दिया. टाइम लगता है. इट गोज इट इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. क्या बात हो रही है पीछे बच्चे? यहीं पे बैठ के रीड करना शुरू कर दिए क्या 15 बार? It takes time for any of your data to get inside your permanent memory, the subconscious mind, and that is how you present your speech. But until and unless half of your data is in your subconscious mind, आपका mind map नहीं बन रहा है. आप यहाँ पर आके blank ही हो जाएंगे. ठीक है, और अगर 15 बार से भी हेल्प नहीं हो रही है, that means you are much more nervous than you think. हर चीज का एक टेक्निक होता है, उसको फॉलो करिए. अंडरस्टूड? Only then you can improvise your performance. Otherwise फिर नहीं होगा उसका परफॉर्मेंस. और जिनका अच्छा है उसको और बेहतर करना है ना. वहीं पे थोड़ी अच्छे पे ही थोड़ी रह जाना. You need to be great, you need to be good, you need to be perfect. There are a lot of potentials inside you. You need to increase that potential. Understood? चलो, यस. और कौन सा पर्सन यहाँ प्रेजेंट है जिसने पहली बार वो 4 टॉपिक्स जो है उसको पहली बार उसको प्रेजेंट करना है? आपका तैयारी हो रखा है? अभी बैठ के नहीं लिखे हो? घर से लिख के लेके आए हो? प्रेजेंटेशन कर पाओगे अच्छे से?
Confident enough? Come. Yes, and learn a little bit patience, all of you. ठीक है? अगर आपका पेशेंस नहीं रहेगा तो लाइफ में कोई भी वर्च्यू पॉसिबल नहीं है अचीव करना. ये चीज मैं स्पेशली दोनों ब्रिज के बैच के स्टूडेंट्स में देख रही हूँ. यू आर presented, if you done your type part of job, you complete my part of job. That is not possible. ठीक है? बच्चे अच्छा बुरा किसी बैच में नहीं होता है. ठीक है? बैच में बच्चे तुम्हारे जैसे हैं वैसे ही थर्ड ईयर में भी वैसे ही बच्चे हैं. हैंडल किस तरह किया जाता है वो डिपेंड करता है. ठीक है? Good morning, all of you. My name is Sanshika. Yes. First of all, thank you for giving me a chance to give speech on how can we reduce the wealth gap between rich and poor. By introducing minimum wages and universal basic income, the workers' laws can be reformed. This will also help to decrease the gap. UBI. It means universal basic income and minimum wages for the less fortunate. Have a similar motive which is provide a regular income which can help in sustaining the individual and his or her family. There is not only me give this speech on this topic, but the main thing is that what can be done to reduce the income gap. Yes, okay. So income gap inequality. So income inequality can be reduced directly by decreasing the incomes of the richest and by increasing the poorest, by increasing the incomes of the poorest. Policies focusing on the latter is required on wages and transferring income. That's all. Thank you. Yes. Any feedback from your side? Acha, she was reading it like a story. But 1 minute. Previously, you have said for many students that they are reading like a paragraph. Now you said she was reading like a story. What is the difference in your own statement? क्योंकि इससे पहले आपने 2-3 बार बोला है and you said that he or she was reading like an article or a newspaper, and you said that she was reading like a story. What do you mean by the difference? Then how is it story reading? When you read a story, there are modulations. ठीक है? दादी नानी किसी की सुनाती थी कहानी कभी? वॉइस मॉड्यूलेशन सुना है उनका? होता है ना? स्टोरी रीडिंग में बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है? Do not have that. Yes. You said you were prepared. नहीं, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका प्रिपरेशन सिर्फ इतना ही रहता है. आपने दिमाग में सेट कर लिया, लिख लिया और प्रेजेंट कर दिया आपके. ठीक है? There is a huge gap between, yes, listen here, there is a huge gap between writing the speech and presenting it in front of the audience. ठीक है? उस गैप को प्रैक्टिस से फिल करना होता है. ठीक है? Your communication is an art. बिना प्रैक्टिस किए आप कोई आर्ट नहीं सीख सकते हो. ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कल को सोचूं कि कल मैं मूवीज में गाना गाऊं तो कल शुरू हो जाएगा मेरा गाना. पॉसिबल नहीं है. It is an art. You need to practice continuously to gain a certain level. ठीक है? तो बिना प्रैक्टिस के मत आइए यहाँ पर प्रेजेंट करने. पहले ही बता दे रही हूँ. Sit down. क्या दिमाग में कुछ है तुम्हारे? ऐसा नहीं, ये सारी थिंकिंग लेके क्लास में मत आया करो मेरे. नहीं तो किसी दिन 3-4 थप्पड़ पड़ गया ना तो सारा दिमाग खाली हो जाएगा फिर. खुद तो दिमाग में कचरा भरी रखे हो, उसके साथ साथ 10-5 और लोगों को बर्बाद कर रहे हो. If you cannot learn something better here, then do not spread your disease inside other people's mind.
अगर आप कल्चर नहीं जानते हैं, अगर आप अच्छे से नहीं रह सकते हैं, तरीका नहीं जानते हैं, डिसिप्लिन में रहना नहीं जानते हैं, मत रहिए, क्लास से बाहर निकल जाइए। बाकी बच्चों में इनडिसिप्लिन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। Have yet to start your course. Not force the university or your college to take strict action against you. Without discipline, you are not going to get anything in your life. Neither your certification, neither your job. Discipline maintain करना सीखो क्लास में, ठीक है? Just because you are allowed to speak doesn't matter, doesn't allow you to speak anything in front of the classroom. आप टीचर के सामने खड़े हैं, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? यही रिस्पेक्ट है आपके टीचर्स के लिए, यही सिखाया है आपको। देखो मुझे नहीं पता तुम किस स्कूल से आए हो, कहाँ से बैकग्राउंड है तुम्हारा, लेकिन यहाँ पर आके जो सिखाया जा रहा है वो सीख लो। जैसे बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन कोई जॉब तुम्हें नहीं देगा, और नहीं करनी है जॉब तो फालतू में यहाँ पे पैसा बर्बाद मत करो पढ़कर, कि तुम्हारे जैसे बच्चे जिन जॉब नहीं करना होता, जिन्हें करियर नहीं बनाना होता, वो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट। A very wonderful morning to all the listeners. My name is Akansha. My course is BCA, and now I am a student of this too. My topic for today is innovation versus innovation. Nothing is permanent in this world, neither product nor technology. As per time passes, by new upgradation and improvement is made in technology, so that there is innovation and invention in almost every sphere of life. But there is clear difference between innovation and invention. So first let's try and define both of them. Invention is a creation of brand new product or device that never existed before. Innovation refers to change made in an existing product, idea or field. To innovate means to manipulate existing invention and turn them into product and process that is beneficial for the society. There is a very slight difference that divides invention and innovation. For some example, the first telephone was invention, but the first smartphone is an innovation. Wheel is an invention, but when it is used in vehicle for transportation purpose is an innovation. In same way, motor is an invention, but when it is used in fan to give air is an innovation. Without innovation, society or companies will not benefit. For example, some people believe that Steve Wozniak, who was the first person to build and design Apple 1 and 2, whereas but did not get name and fame that he deserved. Whereas Steve Jobs, who was made and engineered, got much more name and fame than he deserved. Steve Jobs, with his innovation like iPhone, iPad, played his part in the success of Apple. I want to conclude by saying that both innovation and invention are important and play a vital role in the success of any company. History stands evidence that society has rarely enjoyed the benefits of invention until and unless proper innovation was done to it. Thank you. Yes, do you find any improvement in your own speech from the last time? What? तो अभी आपने प्रैक्टिस करके आए तो आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहे हैं. Still there is a lot of scope for voice modulation. I think it is much better because even if a
you were presenting, your voice was pleasant enough to understand each and every word I'm saying. But still there is voice modulation considered. Also, again, same examples are used again and again. Once. Need to come up with better examples, come up with inventive examples. Okay, in my paper. Next, again, next point that I want to do. Yes. Your confidence level is increasing, but that is not shown in your body language, rather in your voice. आपकी voice में सुनाई दे रहा है कि confidence रहा है, लेकिन आपके body and should be physical also. वो आ जाएगा, but वो बन रहा है. Practice करते समय ध्यान देंगे कि आप किस तरह खड़े हो रहे हैं, किस तरह present कर रहे हैं. Not shuffle. Okay, it is distracting for the audience. Stand as not still, but stand as less movement you can make during the speech. It is much better. Okay. A very warm good morning to everyone. My name is Avinash Ojha. I am going to speak on the topic how can we reduce the wealth gap between rich and poor. First is education. Poverty and education are inextricably linked because people living in poverty may stop going to school so they can work, which leaves them without literacy and numeracy skill. I think increased access to education can contribute to reducing poverty. Second point, rich do not want to distribute their muscle and money power to the poor. Fear of losing their wealth. In my experience, the number one fear of the high net worth is pervasive fear of losing their wealth. In the most expected fear of rich like losing power, control, money status, and being hunted during the crisis. Social cause. Our government launched various schemes for the poor, but it cannot reach to the poor due to the corruption work done by government employees. They are not much knowledgeable to understand properly about the scheme. Also due to various attacks done by foreign invaders. This is also a cause of difference because they looted India many times. And also due to casteism. Upper caste take control on the society from many years so that reservation comes. Reservation is based on the caste is good, but time change now. Poor cannot earn profit from this. So now government should take various steps like reservation on the basis of income, not on the basis of caste. The government should enforcing rule like one family must have a person from government job. So either he or she is ST, SC, general or OBC. This can be done by public support only. We cannot we not up our if we not up our level of thinking like giving people respect on the basis of talent and skill, not on the basis of caste. Great example is Narendra Modi. We support him on the basis of talent, not on the basis of caste. At last, I want to say Mahatma Gandhi's word: resource is not for satisfy the greed of the rich people. Resource is for satisfy the need of the poor people. Hope you like it. Thank you and have a nice day. All right. Any feedback from your side? Okay, yes, he has presented it in a very simple format, which was understandable. Great examples you have used, but still there is the innovation part, the creation part. ठीक है, आपका कुछ अपना creative idea उसमें नहीं है. अपना in the sense मतलब आप क्या solution देना चाहते हो उसमें. नहीं, गवर्नमेंट तो करेगा ही बच्चे, गवर्नमेंट का काम है आपके लिए सर्व करना, ठीक है. Government was made by the people, for the people and of the people. लेकिन आप अपने से क्या करें? What is your own idea? ठीक है.
when you provide a solution, if you can provide, मैं जरूरी नहीं कह रही हूँ, it is not compulsory, but if you can provide your own ideas for the solution of the problem, that is much better. And second of all, no issues in your written format, but still आपका थोड़ा जो jitteriness है यहाँ पर, ठीक है, movement भी jittery है और बात करने का तरीका भी jittery. So you need jittery in the sense वो जैसे lightning shock वाला होता है, वो movement भी है और इसका बात करने का तरीका भी. You need not do that. Try to control, maintain the posture as calm as you can, and जो voice होनी चाहिए वो ऐसा नहीं लगना चाहिए that you are trying to run up to the conclusion or to trying to run up to the seat. ठीक है, थोड़ा सा उसमें pause ले लेकर बोलिए, थोड़ा सा मतलब let them know that you are happy to come up here and you are enjoying creating the message, to giving them the message. ठीक है, all right. Next we will do in the next class. जिसने भी prepare किया है, again have some patience. I have 60 students or 70 students to do. Okay, you are one, but my students are 60 to 70.